हेलो पीपल एंड वेलकम टू रेडलाइन। सो आज हम बात करने वाले हैं रेनॉल्ट क्विड के बारे में। बिना किसी अडू के स्टार्ट करते हैं। क्विड की सबसे पहले आते हैं लुक्स पे। जो चीज़ आप एक्सटीरियर में देखेंगे, लुक्स मेरे हिसाब से सब्जेक्टिव होती हैं। जो चीज़ मुझे अच्छी लगे वो आपको अच्छी लगे, ज़रूरी नहीं है इस तरह कुछ। तो मैं कहूँगा कि लुक सब्जेक्टिव है, तो अगर आपको अच्छी लगती है दैन दैट्स गुड। मेरे अकॉर्डिंग ये कार जिस प्राइस रेंज में आ रही है या जो इसका प्राइस रेंज है उसके हिसाब से आई थिंक सेगमेंट में भी सबसे अच्छी लगती है। इसकी जैसी हैंडसम और स्मार्ट कार आपको मार्केट में नहीं मिलेगी। जो हेडलैम्प्स है वो छोटे हैं। इट हैज बोरोज मैनी थिंग फ्रॉम द हायर रेनो कार्स लाइक द डस्टर एंड ऑल। रियर एंड भी सुंदर है और स्पेशली द इंटीरियर इज रियली ब्यूटीफुल। सो टॉकिंग अबाउट द इंटीरियर इज नथिंग टू राइट बुक अबाउट। जो फ्रंट विंडोज हैं दे आर पावर विंडोज, रियर विंडोज पावर विंडो नहीं है, दे आर योर रन ऑन द मिल मैनुअल विंडोज दैट यू हैव टू क्रैंक टू गेट डाउन। और जो विंडोज के स्विच है दे आर प्लेस्ड इन द सेंटर कंसोल, नॉट द मोस्ट कन्वीनियंट पोजीशन, बट उसके साथ एक डोर लॉकिंग का स्विच भी दिया गया है जिसको आप प्रेस करके सारे डोर्स एक साथ लॉक कर सकते हैं। दैट इज रियली रियली गुड थिंग। कोई भी चीज़ यहाँ पे चीप फील नहीं होती है, जैसे कि बहुत ज़्यादा कुछ सस्ता सामान यूज़ किया है। कुछ हार्ड प्लास्टिक्स आर यूज्ड बट दे आर ऑफ रियली रियली गुड क्वालिटी। और जो ऑटो वेरिएंट है उसमें एक डायल भी दिया गया है नियर द विंडो एंड पावर स्विचेस एंड लॉक स्विच, जो कि आपको ड्राइव, न्यूट्रल एंड ऑटो में स्विच करने में काम आएगा। एंड मैनुअल में इस जगह जस्ट एक डमी दी हुई है, इट्स नॉट एन एक्चुअल स्विच। सो आगे की बात करें द गियर लीवर फील्स गुड एंड रेस्ट ऑल द थिंग्स फील्स गुड। द सीट की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। लाइक द एक्सेंट कलर्स दैट आर यूज्ड, लाइक द रेड कलर्स यूज्ड ऑन द सीट्स एंड ऑल। क्लाइंबर में एक्सेंट्स कलर काफ़ी ज़्यादा हैं बट क्लाइंबर वाज नॉट अवेलेबल वेयर आई शॉट, सो वीडियो आउट सून, टू लुक फॉर दैट, सब्सक्राइब टू द चैनल। और नेक्स्ट अब बात करें रियर सीट्स के बारे में। रियर सीट्स में जो लेग रूम है, थाई सपोर्ट है, वो यानी टॉप ऑफ द क्लास नहीं है। ऑब्वियसली इट कुडंट बी ड्यू टू द प्राइस ऑफ द कार बट इट इज़ गुड। हेडरूम थोड़ा सा टाइट है पैसेंजर का। 6 फीट का बंदा आप इसके अंदर नहीं घुसा सकते, यानी कि 6 फीट 5 इंच का आदमी इसके अंदर नहीं बैठ सकता। उसका हेड ऑब्वियसली हेड क्लियरेंस में प्रॉब्लम आएगी बट इट इज़ गुड ओवरऑल। सीट को थोड़ा सा लो करके एडजस्ट किया जा सकता है। और पिछले सीट्स में एक यानी कि सेंटर आर्म कंसोल भी दिया गया है, द आर्म रेस्ट थिंग विच पुल्स आउट ऑफ द रियर सीट्स एंड दैट इज अ रियली गुड टच आई गेस। कीप टॉकिंग, द थिंग हैज अ एलईडी टच स्क्रीन इन द सेंटर। उसका टच रिस्पॉन्स हाँ ओके है, इट्स गुड, इट डज इट वर्क। एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले आर नॉट सपोर्टेड बट दैट्स व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस प्राइस रेंज। और बाकी बात करें, दिस थिंग गेट्स अ रियर पार्किंग कैमरा एज वेल व्हिच डजंट हैव द हाईएस्ट रेजोल्यूशन इन द वर्ल्ड। ऑब्वियसली यू आर इवन नॉट गोइंग टू नीड द हाईएस्ट रेजोल्यूशन, यू डोंट हैव टू शूट 4K वीडियोस विद दैट, बट इट वर्क्स एज अ रियर पार्किंग कैमरा एंड दैट्स गुड। सेफ्टी पे दिस थिंग गेट्स 1 airbag बिफोर this thing scored 0 in many safety tests, so Renault updated it with 1 airbag which gave the 1-star safety rating, and that's decent enough for a car of this price range or this caliber. Rather, talking about the cars in this segment like the Sentra and Alto are better on safety but they aren't as good in feature or looks. So अगर आपको इन कार्स के बारे में और जानना है then I'll place some links for my Santro review and other reviews up in the I button or like down in the description or something. Boot storage की बात करें then this thing gets quite a lot of boot storage for its size. It is good enough for storing 1 trolley bag or 2, and here are our camera bags for scale. Now without any further ado, let's come to the drive. I drove both 800cc and 1 liter engines and they both feel like kind of lacking in power and torque. Like I was in 3rd gear and I floored the accelerator, or I was like waiting कि कभी आगे जाए. It goes 10, 20, 30, 40, 50. It's too lame with power. Like Santro feels much faster on its feet. And you talking about the wheels, this thing doesn't even get alloy wheels. There's not even an option to get alloy wheels. We all get steel wheels. And 3 lug nuts are used on the wheels, again cost saving. Engine bay के अंदर भी most of the parts are plastic, cost savings obviously, but that is what it is. And talking about the other things, the bumpers are hard plastic and they are painted. कि this thing doesn't feels as fast on the road. There are outside noises, जो बाहर की आवाज़ें हैं वो कैबिन के अंदर तक सुनाई देती हैं. The cabin is not well isolated. इंजन भी काफ़ी वाइबी है, 2000 RPM. There is not even a tachometer included, although the speedometer cluster is fully digital unit, but there is no tachometer. But I can feel it after just like 2000-ish RPM, this thing tends to vibrate quite a bit. You can feel the vibrations on the steering, on the gear lever and all, but
that's okay for the price you are paying for this car. The power is like in the higher 50s or 60s depending on the model you choose, and that's well decent enough for the weight of having a car having a weight of just 700 kilograms. And so that's about it. This thing weighs less, will give you good mileage, has 2 engine options available. It gets points from me for the interior accent kind of things. There's a good styling on the exterior as well as interior. And then the features, the lower model doesn't even have a rear camera, I guess, and you can also miss out on the LED touch screen in some variants. There's an auto variant available. I didn't got around the auto variant in this video, so that's a topic for another video. But overall, this car feels good for what it is priced at. You definitely don't get the premium components like projector headlamps, rain sensing wipers, not even wipers. This thing has one wiper for the front windscreen, and that's okay for the small windscreen that it has. So verdict की बात करें, should you buy the car? If you are in a low budget and you drive around the city and you don't do much tours and you're definitely not planning on burning out roads and tracks, then yes, please go ahead and pull the trigger. This thing is cheap and can carry your family everywhere. So that's about for this video. You've been listening to Mayank. Thanks for watching and enjoy the B-roll of the car with good music playing in the background. Bye.